Okay. So in previous lecture, I had explained this salt bridge. This is the role of the salt bridge. You can understand with this pick anode zinc electrode, which is deep into the zinc ion. This is the copper electrode cathode, which is deep into the copper ion solution. And these two half solution connected with the salt bridge. Potassium chloride, like sodium chloride. Potassium will be moved in this side and sodium in this side. Chlorine in this side for neutralize this, right? So oxidation and reduction. I had explained how to write the formula, how to represent the formula of this cell. I will explain with another example. In previous lecture, I had explained two examples how this formula will written when notation is given there. So by using this notation, how to write the formula? One example is here. First of all, lead. So we write this oxidation operation where lead the electrode release electron convert to lead ion. Next here, silver ion accept electron and convert into the silver metal. So this is called what? Oxidation half reaction because of the releasing electron, and this is the reduction half reaction because of the gaining of electron. When we add to these two reactions, then we get the net reaction. But before adding this net reaction, our electron should be balanced. So how to balance this electron? So listen. Here is the 2 electron release, here is 1 electron gain. That's why this equation will multiply by 2. So while adding the half reaction, the electrons must cancel. For this, it may be necessary to multiply one or both the half reactions by the suitable numerical factors. So after that, we can add this equation and we get the net equation. This is the final equation of this notation. Lead plus 2Ag plus aqueous will convert into the Ag2 plus aqueous plus 2Ag. For example, see this. In this case, how to write the cell reaction? Now I'm going to write the cell reaction. You observe this. You can observe this properly. How I'm going to write it. Suppose here is this one. So cell reaction. First I'm writing this. See this. Here is the oxidation half reaction, and this is what? Reduction half reaction. In oxidation half reaction, hydrogen release electron convert to H plus ion. So how to write this oxidation half reaction? So we are observing here H2 gas. It will release electron to form the 2H plus ion aqueous plus 2 electron. And here reduction half reaction is what? Cr3 plus aqueous will gain this 3 electron to convert Cr. But when we are going to add this to half equation, our electron is not balanced. So for balancing of this electron, this will be multiplied by 3 and this will be multiplied by 2. So what we'll get here? Here we write, see, when I'm going to multiply it, then what we write here? See, again we can write this part like, therefore we write this what? CH2 gas. This is also important part to write the physical state. 6H plus ion plus 6 electron. Here we multiply by 2, so we get 2 Cr plus aqueous plus 6 electron give 2 Cr solid. We are cancelling this electron. Finally, we get this what? CH2 gas plus 2 Cr P plus aqueous will convert to 6H plus ion plus 2 Cr solid. I hope understood this part. Same things are given here. You can see that. See. Are you getting my point? Same, whatever I'm written here, same things are here. Just we
when we are going, important part is what? After saying this notation, you can write this part. This is very easy. But just you have to take care about when we are going to add this to half reaction. So when you are going to add this to half reaction, our electrons should be balanced. That is the important part. And for balancing this electron, you can multiply with proper number, and then you can add it. Is it clear? Just add it. Note down this part. Noted? Okay. Okay. So see this part. Same. Okay. So see this addition. How this addition takes place? As I told you, we have to multiply by proper number of the coefficient, then we get the electron balance and add it. तो जो मैंने बताया था वही सेम है. अभी इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है ड्यूरिंग दिस राइटिंग द सेल रिएक्शन? देखो सेल नोटेशन नॉर्मली एग्जाम में सेल नोटेशन देते हैं और यू हैव टू राइट दिस सेल रिएक्शन. तो मैंने क्या प्रोसेस बताया आपको एकदम सिंपल वे में. फर्स्ट यू राइट द ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन, देन रिडक्शन ऑफ रिएक्शन बाय यूजिंग सेल नोटेशन, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है. दैट इज कॉल्ड व्हाट? नेट रिएक्शन. क्लियर है? गॉट इट? देखो यहाँ पे सेम थिंग सर. Now, electrode potential and cell potential. This is the another topic, electrode potential and cell potential. So theory of the single electrode potential. What is single electrode potential? A galvanic cell is composed of two half cells or electrodes, anode and cathode. Each half cell is composed of a metal electrode immersed in the solution of its own ions. जैसे आपने देखा ना, zinc immersed into what? Zinc ion. Copper immersed into what? Copper ion. Now, at the surface of the separation of the metal and solution, there exists a difference of electrical potential between the metal and solution. Right? This potential difference is called what? Electrode potential. I will explain it. See this. Like that oxidation. Oxidation means it is called what? De-electronation.
See, metal rod when deep in the solution of its own ion, it's undergo oxidation or de-electronation. क्या होता है ये de-electronation? Just pay attention about this. During this process, M metal, that can be any metal, enter in the solution as the M plus ions. For example, see this. क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही है? मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको. सपोज ये जिंक है, इसको ऐसा समझो, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा. Here I am taking this zinc electrode. Here I am taking this zinc electrode, and this zinc electrode deep into the zinc sulfate solution, where Zn plus and SO4 minus are present. This is already zinc. Lot of zinc are here because this metal is made up by what? Zinc atoms. Now, de-electronation means what? This zinc atom of this electrode release its electron. अपना इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे छोड़ेगा और जैसे इलेक्ट्रॉन निकालेगा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? Zn plus आयन में. This process is called what? De-electronation. वही हो रहा है प्रोसेस यहाँ पे. See this. Right? यहाँ पे कैसा है? जो भी मेटल है, this metal will release its electron. देखो मेटल N means what? Number of electron release. Suppose अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन देन 3 प्लस बनाएगा. 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है देन 2 प्लस बनाएगा. तो जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उतना प्लस. तो n इलेक्ट्रॉन मींस व्हाट? n प्लस आयन. मेटल कन्वर्ट हो जाएगा. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? de-electronation. This process is called what beta? De-electronation. So look at here. De-electronation. Right? Are you getting my point? Na? This n metal will release its electron, n electron release and form the n plus ion. Right? This process is called what? De-electronation. You are observing here. Right? So this eventually lead to formation of electrical double layer developed of the potential oxidation. So आप देखोगे कि इलेक्ट्रोड के सरफेस पे क्या हो गया? डबल लेयर क्रिएट हो गया. इनसाइड नेगेटिव एंड आउटसाइड पॉजिटिव. And because of this potential difference, it is called what? Oxidation potential. यहाँ पे जो difference create होगा, जो develop होगा potential, that is called what? Oxidation potential. Because this potential develop because of the oxidation, otherwise de-electronation, otherwise releasing of electron. Are you getting my point? Everyone is getting my point? Yes, sir. Okay. So chalo, next part. See this. So आपको ये पता चल गया? Tendency of metal to undergo de-electronation and enter the solution as metal ion is known as what? Solution pressure. Definitely here create the pressure, right? Zn plus ion increases in the solution. तो यहाँ पे कैसे कैसे इसको? That is called what? Solution pressure. That is called what? Solution pressure. You have to note down this point one by one, हाँ? जैसे यहाँ पे देखो, this is important part. You note down this part. This eventually lead to formation of the electrical double layer developed on the potential develops of the potential oxidation. That's what is called what? Oxidation potential. Note down this part. Then you have to note down this part also. Tendency of metal to undergo de-electronation and enter the solution as metal ion is known as what? Solution pressure. मेटल जो होता है वो क्या होता है? डी इलेक्ट्रोनेशन, अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करके सॉल्यूशन में इंटर करता है और इसी को बोलते हैं सॉल्यूशन प्रेशर, पीएस. नोट ऑन दिस पार्ट आल्सो. नाउ reduction potential, that is called what? Electronation. Metal rod when deep into the solution of its own ion, it undergo reduction. कैसे? Now in this case you are observing here, see, during this process
M plus aqueous means metal ion of the electrolyte accept electron from metal electrode and get deposited as M solid. Means इसमें जस्ट अपोजिट हो रहा है, यहाँ पे कहीं भी वायर से एक्सटर्नल साइड से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है इलेक्ट्रोड पे, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, मेटल एक्सेप्ट करेगा. सीरीज M plus aqueous accept this electron and convert it to the metal like this. You're observing here. See this. Getting my point? One more देखो, M plus आयन आया, ये N इलेक्ट्रॉन लिया और कन्वर्ट हो गया M में. तो यहाँ पे अपोजिट हो रहा है, यहाँ पे M क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन रिलीज करके M प्लस में कन्वर्ट हो रहा था. यहाँ पे M प्लस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके M में कन्वर्ट हो रहा है. मेरी बात आपको समझ में आ गई? M means what metal? It can be zinc, it can be copper, it can be iron, right? निकल, कोई भी हो सकता है यहाँ पे. अब इसके बाद इस प्रोसेस को जहां पे वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन. और इसी प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोनेशन. गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रोनेशन. सो एवरी टाइम द मेटल आयन अंडरगो रिडक्शन, इट कम्स आउट टू द सॉल्यूशन. This lead to reveals the increase the SO4 ion. Thus, metal rod is surrounded by negatively charged SO4 minus ions and becomes relatively hot. Right? See this. मैंने बताया ना, अगर Cu प्लस है और SO4 माइनस, तो Cu प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके यहाँ पे डिपोजिट हो रहा है. ये देख लो ना, ब्लू स्ट्रिप, दैट इज व्हाट, डिपोजिशन ऑफ दिस मेटल कॉपर आयन. ठीक है. तो आप देखोगे कि जहां पे डी इलेक्ट्रोनेशन हो रहा था, वहां पे ये जो होगा इलेक्ट्रॉन डिटोरिटेट होगा, थीन होगा, और यहाँ पे कैसा हो रहा है, थिक हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. सो दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर डेवलप ऑफ द पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन. यहाँ पे भी डबल लेयर हो गया, इनसाइड पॉजिटिव आउटसाइड नेगेटिव, and that's why here double layer is created, and this is the responsible for the potential difference, that is called reduction potential. Note down this one. Got it बेटा? इसमें किसी को कुछ डिफिकल्टीज है? अंडरस्टूड दिस पार्ट प्रॉपरली? यस. इलेक्ट्रोनेशन, डी इलेक्ट्रोनेशन समझ में आया? डी इलेक्ट्रोनेशन में क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. और डी इलेक्ट्रोनेशन में क्या हो रहा है, रिडक्शन, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रिडक्शन पोटेंशियल. See this double layer create here, huh? So tendency of metal ion to accept the electron from the metal and get deposited as metal atom is known as what, osmotic pressure. तो वहां पे कौन सा प्रेशर था बेटा, वहां पे सोल्यूशन प्रेशर, और यहाँ पे कैसा है, ऑस्मोटिक प्रेशर. तो जब ये मेटल अपना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पे रिलीज करके मेटल आयन में कन्वर्ट होता है, सोल्यूशन में आता है, तो वहां पे प्रेशर क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सोल्यूशन प्रेशर. एंड मेटल आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके जब मेटल में डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पे, तो वहां पे जो प्रेशर आता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ऑस्मोटिक प्रेशर. क्लियर हो गई बातें? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड बेटा? यस सर. गुड. नोट डाउन दिस पॉइंट. चलिए आगे चलते हैं. नाउ थियरी, डी इलेक्ट्रोनेशन, इलेक्ट्रोनेशन, राइट. थ्री केसेस. केस वन देखो यहाँ पे ध्यान से, वन बाय वन देखते रहो. केस वन, केस टू, केस थ्री. बहुत ध्यान से देखना है. यहाँ पे कैसा हो रहा है, केस वन बाहर पॉजिटिव है, अंदर कैसा है, नेगेटिव है. इस केस में कैसा हो रहा है, देखो, सोल्यूशन प्रेशर इज ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर. आपने देखा सिंबल ना, सोल्यूशन प्रेशर इज ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर. पीएस इज व्हाट, सोल्यूशन प्रेशर, पीओ इज व्हाट, ऑस्मोटिक प्रेशर. केस टू,
In this case, बाहर negative है, right? And inside कैसा है? Positive है. In this case, our solution, osmotic pressure is greater than the solution pressure. And here is the case where solution pressure and osmotic pressure both are equal, right? तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होंगे, बट यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा, तो यहाँ पे कोई भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा. Now, definition of electrode potential. You will write this definition. The potential difference stabilized due to electrode half reaction occurring at the electrode surface is the electrode potential. Oxidation potential. The potential developed at the single electrode